नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा है? कौन कौन है मेरे साथ जुड़ा यहाँ पर? नमस्ते नमस्ते। मैंने कल आपसे कहा था रात के स्ट्रीम में कि मैं आपसे मैच के बाद मिलूंगा, पर आई थॉट यू नो व्हाट, लेट्स डू अ स्ट्रीम इन द आफ्टरनून, क्योंकि अभी 2:09 है और 3 बजे से तीसरा दिन शुरू होगा, यानी कि WTC फाइनल। सो लेट्स सी कौन कौन है मेरे साथ यहाँ पे। सभी का स्वागत है। होपफुली आप लोग ठीक है। पता नहीं आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे आज के मैच को लेके, बिकॉज वी नॉट श्योर कि आज क्या होगा। क्या आज मैच खत्म होगा? क्या टीम इंडिया कुछ कर पाएगी? क्या रहाणे और केएस भरत और लोअर ऑर्डर कुछ कर पाएंगे? क्या शार्दुल ठाकुर के बल्ले से रन आएंगे? बहुत 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 दुविधा में है ये पूरी संख्या दोस्तों, जो इंडियन टीम के फैंस हैं। एनीवेज, वेलकम बैक टू द शो। इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। और जो बेल आइकॉन आता है नीचे, वो तो आप दबा दीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि यार मैं जो बैठ के क्रिकेट पे गपशप लगाता हूँ, कभी कभी बकर बकर करता हूँ, उसका कुछ फायदा है क्या? लोगों को मजा आ रहा है? कल रात को 10:30 बजे काफी लोग जुड़े थे, 500 तकरीबन लोग जुड़े थे लाइव स्ट्रीम पर। सो लेट्स सी अभी फिलहाल क्या चल रहा है, आप लोग कहाँ हो, क्या हो रहा है। क्या कहूं दोस्तों, 151, 318 runs behind. जडेजा इज डूइंग वेल, बट सोवियत सोवियत आपका नाम क्या है? आई वंडर आपका नाम क्या है? स्वागत है दोनों का। बट आई वांट टू नो आपका नाम क्या है। हम तो जो है, हम तो आपको बता चुके हैं, नाम है जेमी ऑल्टर। व्हाट इज सोवियट्स नेम? जो कह रहे हैं राम राम भाई, प्रणाम आपको भी। और अ वंडर रेगुलर व्यूअर है, काफी कड़क जवाब देते हैं, कभी कभी गुस्से भी होते हैं इंडियन टीम की हालत देखकर, मेरी तरह। वेलकम बैक वॉन्डर एंड वेलकम सोवियत। क्या लगता है दोस्तों, आज खत्म या कल तक जाएगा? आज रहाणे बहाने बहाने, अच्छा नाम दिया आपने, बहाने। आज रहाणे सेंचुरी मारेगा। देखो भाई, उम्मीद करते हैं कि रहाणे 100 मारे। केएस भरत भी फाइनली अपने टेस्ट करियर में, हालांकि छोटा सा टेस्ट करियर इनका 5वां मैच है, वो कुछ करे भाई, क्योंकि रन्स की सख्त जरूरत है आपको। मैच तो आपके हाथ से निकल गया, आप ये मैच जीत नहीं सकते हो अभी भी दोस्तों। 3 दिन रिजर्व डे भी है वैसे, अगर बारिश हुई और अगर ड्रॉ हुआ तो दिस इंडियन टीम हैज टू बैट आउट द होल डे। लेकिन क्या ये टीम कर पाएगी? एक विकेट के बाद आप लोअर ऑर्डर में आ गए हो, यानी कि शार्दुल ठाकुर। अश्विन नहीं है, अश्विन की बैटिंग जरूर आपको उनकी बैटिंग की कमी महसूस होगी। I just hope they can somehow bat out day 3, take the match into day 4. मैच तो खत्म है, रिजल्ट हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी ये मैच, क्योंकि ये बहुत ही वन साइडेड ये मैच है। बट लेट्स होप कि हमारे जो प्लेयर्स बाकी हैं वो कुछ कर पाएं, कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाएं, कुछ एटलीस्ट डे 4 तक मैच लेके जाए। बिकॉज भैया 5 विकेट डाउन, 318 रन आप पीछे हो, कहां से आएंगे रन? चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि रहाणे 100 मारेगा। भाई क्या लगता है हम कम बैक कर पाएंगे? नहीं आयुष, मैंने तो डे 1 पे ही कहा था, डे 1 पे कहा था, बल्कि मैच के दूसरे ओवर में मैंने कहा था, जब बॉल घूम रही थी, मैंने कहा भाई ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ये ओवरकास्ट कंडीशन, धूप आने वाली है, विकेट बहुत ईजी रहेगा। और मैंने दूसरे ओवर में कहा था मैच के कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 450 से कम नहीं बनाएगी, और देखिए वही हुआ। और उसके बाद जब आप 4 विकेट खोते हो तकरीबन 2 डेढ़ घंटे के अंदर, मैच तक गया। You know very well India cricket, Rohit will captain in West Indies too. No, I don't think he'll captain because रोहित को देखिए तो हर सीरीज के बाद वो ब्रेक लेते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर वो जाते वेस्ट इंडीज तो वो करते, बट आई नो कि रोहित शर्मा इज नॉट गोइंग टू गो टू द वेस्ट इंडीज, ही इज गोइंग टू गेट अ ब्रेक। हालांकि पूरा 1 महीने का गैप है, जून 12 से लेकर जो इस मैच का आखिरी डे है ऑफिशियली, देयर इज अ 1 month गैप, बट आई स्टिल थिंक रोहित शर्मा विल टेक अ ब्रेक, वो वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। बट लेट्स सी, वी हैव नो बेंच स्ट्रेंथ इन बैटिंग। नहीं, बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ होने के बावजूद पुजारा को लिया, रहाणे को रिकॉल किया, बेंच स्ट्रेंथ है। लेकिन देखिए 6 महीने से हमारे कोई सिलेक्टर्स नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं सिलेक्शन कमेटी कौन है ही नहीं। तो जब सिलेक्टर्स ही नहीं है तो लोग कहां से सिलेक्ट होंगे? ये तो कैप्टन और कोच कह रहे हैं बैठ के कि भाई रहाणे आजा, फिलाना आजा। व्हेन देयर इज नो सिलेक्शन कमिटी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो दोस्तों? ये वही बीसीसीआई है जिनका 6 महीने से सिलेक्शन कमेटी नहीं है। वर्ल्ड कप, साला वर्ल्ड कप 4 महीने बाद शुरू हो रहा है और बीसीसीआई ने आईसीसी को अब तक स्केड्यूल ही नहीं दिया। तो इस जिस तरह से ये बोर्ड चल रहा है दोस्तों, टीम की हालत तो खराब होगी ना। T20 में इंडिया तो डब्बा है, वनडे में फिर भी ठीक ठाक है। मैं काफी उम्मीद रख रहा हूं वनडे वर्ल्ड कप से, विराट कोहली से और खासकर शुभमन गिल से। पर T20 टीम तो रद्दी है हमारी, और टेस्ट टीम तो भाई आप देख सकते हैं ये घर पे जीतते हैं तो। लेकिन माय पॉइंट इज, लुक एट द बिगर पिक्चर। जब बोर्ड ही इतना खराब है, बोर्ड में कुछ विजन नहीं है, तो यार टीम कहां जीत पाएगी ऑस्ट्रेलिया से यार? ऑस्ट्रेलिया की आधी स्क्वाड तो 2 महीने से काउंटी क्रिकेट खेल रही, हमारे प्लेयर्स पुजारा को छोड़ के सब आईपीएल खेल रहे। और वैसे पुजारा ने जो 2 महीने से या 6 हफ्ते से वहां पे डिवीजन 2 में रन
मारे, क्या हुआ कल? बॉल को जज नहीं कर पाए। तो प्लीज बुरा ना मानिए मेरी बातों को, शायद आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे, बट यू नो डोंट एक्सपेक्ट। डिड यू एक्चुअली एक्सपेक्ट? मैं तो पहले से कह रहा हूं इंडिया का कोई चांस था ही नहीं इस मैच में, 2 महीने के आईपीएल के बाद, और ये टीम इतनी इतनी प्रैक्टिस करके आ रही है। और देखिए, ना तो हमारे कप्तान चलते हैं, ना हमारे बॉलर चलते हैं। आज सीडीसी में क्यों नहीं आ रहे हो? सीडीसी मतलब सीडीसी क्या है भाई, मुझे बताओ। सोवियत को तो रोना आता है, इतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट गुड। बिल्कुल एमपीके, इतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है भैया, ठीक नहीं है। क्या लगता है भाई फॉलो ऑन होगा? फॉलो ऑन मेरे ख्याल से ये बचा लेंगे। देखिए, अगर आपने 82 टेस्ट वाले अजिंक्य रहाणे को वापस लाया उनके अनुभव के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए, तो हैव सम होप, होपफुली दे डू अवॉइड इट। लेकिन आप 318 रन पीछे हो, मैच तो गया भाई का। मैच आई थिंक डे 4 तक खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों ने कल कहा था कि मैच आज खत्म हो जाएगा डे 3 पे, लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया विल बी पंप्ड अप इन द मॉर्निंग सेशन, हो सके आखिर के 5 विकेट मॉर्निंग सेशन में गिरे, हो सके लंच के बाद और टी से पहले ये खत्म हो जाए। बट जो भी है, मूड काफी डाउन है। जे शाह का कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? भैया क्रिकेट, आप मुझसे कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल जवाब के बीच में मुझे फंसाओगे आप। जे शाह का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है यार, बताइए। आप ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हो? आप जानते हो ना जे शाह कौन है? नहीं भैया, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। द सिस्टम, लाइक आई सेड यस्टरडे, द सिस्टम माय फ्रेंड्स इज ब्रोकन। हम जो एक इन्वेस्टेड लोग हैं, हम जो फैंस हैं, या जो भी कहें, हम अपने आप को, आप और मैं एक ही हैं, बट हमारे बारे में कहाँ सोचते हैं बीस से यार। Let's look ahead to day 3, दोस्तों. We have Ajinkya Rahane. He's well set. He's batted a lot of balls. He's embedded himself. KS भारत, ये इनका 5वां टेस्ट मैच है। पहली बार ये टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर है पीछे। शार्दुल ठाकुर आपको याद है, पिछली बार जब टीम खेली थी ओवल पे, उन्होंने एक मैच में 250 बनाए। So let's see what happens. पर आई वांट टू नो दोस्तों, आप में से कितनों को लगता है कि मैच आज खत्म होगा, मैच क्या जाएगा, अप्रोच क्या होना चाहिए? प्ले अ बिट अग्रेसिवली और लुक टू बैट आउट टाइम। आई एम सेइंग, देखो, जब विकेट्स का गिरना लाजमी है, जब विकेट्स को गिरने ही है, तो थोड़े आराम से खेलिए। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू डू समथिंग यू आर नॉट। रहाणे काफी सेट लग रहे हैं, उनके पास बहुत अनुभव है। हालांकि इंग्लैंड के अंदर वो 15 मैच खेल के इनका एवरेज 26 का है, but you need to back that player, the player who's, this is 83rd टेस्ट मैच, ये आपके वाइस कैप्टन रह चुके हैं। कुछ मैच के लिए उन्होंने कप्तानी भी करी, काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड है अगर हम देखें, अनबीटन record in test. So let's hope they do it. Let's hope KS Bharat shows that apart from being a very good keeper, he can score runs. शार्दुल ठाकुर, क्योंकि देखो, शार्दुल ठाकुर के बाद आपने अश्विन को नहीं लिया, तो एक ऑलराउंडर जिनके पास 5 टेस्ट शतक हैं, वो आपकी टीम में नहीं है। वैसे मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि कैसे इस टीम उस बंदे को लायक नहीं समझती 11 में आने की, जिनके पास 474 विकेट हैं और जो नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। स्ट्रेंज नो। वेल दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो लाइक बटन ठोकिए। मैच शुरू होगा या मैच रिज्यूम होगा तकरीबन 45 मिनट में। अभी 3 o'clock मैच है। सनी स्काईज, मेरी बातें हो रही थी कुछ कुछ फॉर्मर कॉलीग्स है जो वहां पे हैं इंग्लैंड में, उनके चेहरे पे तो धूप आ रही है, सब चश्मे लगाकर कॉलर ऊपर करके वो जा रहे हैं ओवल की तरफ। Even though I thought Rohit and Dravid will be better management, but to my surprise, they've been worse than Kohli and Shastri. Chirag Gupta, I have to agree with you. ये कड़वी बात है, but I agree with you. See, Rahul Dravid is a fantastic cricketer, and he's got a tactical brain. He knows the game. He reads the game very well. But it becomes very tough to go from the NCA, where you're dealing with players in rehab, where you're dealing with age group under 19, to dealing with the Indian cricket team. It's the toughest job in the business, क्योंकि आप वहां पहुंच के, आप जो भी हो, आप सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, आप इन प्लेयर्स को बैटिंग नहीं सिखा सकते। आपको इनको ईगोज देखना पड़ेगा, इनकी इनकी पॉजिटिव्स, इनकी नेगेटिव्स, इनकी खूबियां, इनकी इनकी कमियां, आपको बेसिकली मैन मैनेजर बनना है। और मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़, शायद, दिस इज जस्ट माय व्यू, आई कुड बी 100% रॉन्ग हियर, राहुल द्रविड़ एक मैन मैनेजर शायद नहीं है। वो एक डोमिनेट, एक अग्रेसिव प्लेयर नहीं है। वो सोचते बहुत हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मुझे लगता है कि इस टीम को रवि शास्त्री जैसे इंसान की जरूरत है, जो कोच नहीं है। इस लेवल पे आके आप कोच नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को, आप बस थोड़े गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। आप एक, क्या कहूँ मैं, एक साउंडिंग बोर्ड, यू बाउंस ऑफ आइडियाज। आप एक साउंडिंग बोर्ड बन सकते हो। So it's unfortunate that the Rahul Dravid Rohit Sharma combo has not clicked, and I've said it many times before.
Maybe you won't agree with my statement, but I think Rohit Sharma has realized that leading Mumbai Indians, who won so many titles because they had a fixed system, a very good scouting setup, and the biggest purse. It's very different leading a corporate tournament team to five titles and captaining the Indian team. Rohit Sharma he's still not even completed 1 year as Test captain. This is only his eighth Test match and first overseas. पिछले 7 Test मैच जो थे रोहित शर्मा के वो सारे घर पे आए हैं. So this is a big test for him. I know he's played a lot of cricket in England, but the fact that Rahul Dravid and Rohit Sharma misread the conditions, misread the pitch, misread their own teams, and played four seamers, I am just shocked that you picked Umesh Yadav over R. Ashwin. 1 hour into the match, there was no overcast conditions. There was some bounce. The pitch was hard. The sun was out. You needed a bowler to give you control, and you went for Umesh Yadav. So it shows that, like Chirag said, Rahul Dravid and Rohit Sharma have not been able to crack it. They could not make the final of the Asia Cup. That means you're not even the best one-day team or T20 team in Asia. You basically stumbled into the T20 World Cup semi-finals where England smashed you by 10 wickets. आपकी T20 टीम तो खराब है, मैं बहुत टाइम से कह चुका हूँ. आपकी टेस्ट टीम बहुत खराब है. आपकी वनडे टीम फिर भी ठीक है, बट घर पे जीत कर आप WTC फाइनल नहीं जीत पाते हो. लगातार 2 बार हमारी टीम वहां पहुंची है और दोनों बार वो हार के वापस आई है. तो it hurts to say that, but क्या करें. Hello, Devesh. Zero hopes. India will be all out in first session itself. Could be 5 wickets. 5 wickets is very, very tough. मेरा नाम तपन है. खाना खा रहा था. आप आप कम सोते हो क्या? आंखों में रोशनी नहीं है. वो लाइट खराब है. पीछे एक लाइट है यहाँ पे. वो भी मैं लगा नहीं पाया तो बहुत डार्क है. I have two white arc lights. एक बाहर रखा है हॉल में, दूसरा वो नहीं, इसलिए लग रहा है. मैं तो बहुत सोता हूँ भाई. मैं कल 9 घंटे सोया भाई, तो मैं बिल्कुल आज बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं. John Smith, under Virat and Shastri, the bowlers were very lethal, whereas under Rohit Sharma, it feels like the 90s team. Yeah, John. I mean, look, of course, Jasprit Bumrah is not around. That's a big loss. But look, this is still a decent bowling attack, which is each of these bowlers has achieved a lot of success overseas: Australia, England, Mohammad Shami, Mohammad Siraj, Shardul Thakur, Umesh Yadav. But look at it. Mohammad Shami and Mohammad Siraj bowled the most overs of their two teams. That's RCB and Gujarat Titans. This was, I believe, the most overs that Mohammad Shami has ever bowled in any IPL season. He took the most wickets. He's fatigued. He's not the fittest player. Mohammad Siraj looked exhausted, and your other two pacers, जिनको आपने लिया मैच में, that is Umesh Yadav and Shardul Thakur, hardly bowled. Umesh Yadav missed more of the IPL than he played. Shardul Thakur sat out a lot of matches for KKR, and there were a lot of matches for KKR that he played and he hardly bowled. So look at the four fast bowlers that India had to pick. Two of them were spent, exhausted after 2 months of T20 cricket in the IPL. The other two in the same IPL hardly bowled. So what were you actually expecting this bowling attack to do? Compare that to Pat Cummins, didn't play the IPL. Mitchell Stark didn't play the IPL. Scott Boland didn't play the IPL. Nathan Lyon didn't play the IPL. You have four refreshed, driven, turbocharged bowlers coming in, and on the other hand, you have four bowlers who are exhausted or undercooked. So it was a recipe for disaster. I'm not surprised कि इंडियन टीम की हालत ये है. अगर ये मुझे साफ नजर आता है और बाकी लोग को नहीं, टीम को नहीं, तो फिर यार भैया हम सब क्यों इस टीम को फॉलो करते हैं? It's really sad यार. रविंदर जीत कह रहे हैं, स्वागत है आपका रविंदर जीत. और आप प्लीज आप लोग लाइक करिए, लाइक बटन दबाइए. जितने भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतनी इस वीडियो की रीच बढ़ सकती है. Ravinder Jeet is saying, will Indian tail ender take throwdowns or do net sessions before today? Of course they will. They will have to. I mean, this is what professional teams do. I have no doubt. आयुष दुबे कह रहे हैं भाई हमारी T20 टीम अगर पूरी नू हो जाए तो चांस रहेंगे हमारे अंडर. बिल्कुल. रोहित शर्मा अभी नहीं करेंगे कप्तानी T20 टीम की. हार्दिक पांड्या T20 टीम के कप्तान बनेंगे. मेरे हिसाब से केएल राहुल अब नहीं खेलेंगे T20. हो सके विराट कोहली भी नहीं खेले, but I think विराट कोहली will play. You need Sanju Samson, you need Ruturaj Gaikwad, you need Yashasvi Jaiswal opening, you need Rinku Singh. You just need to overhaul that T20 team. It is shocking कि आज के जमाने में अभी भी ये टीम समझती है कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली अगर हमारे टॉप 3 हैं तो हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे. भाई आप एशिया के टॉप टीम में नहीं हो. ये टीम ने क्या उखाड़ा लास्ट ईयर? आप एशिया कप फाइनल तक नहीं पहुंचे, यानी कि टेक्निकली आप नंबर 3 टीम हो एशिया कप में. Just pick young players, pick them on form, pick Yashasvi Jaiswal, pick Rinku Singh, pick Rituraj Gaikwad, pick players.
Pick a team which you can evolve around for the next 5 years. क्या अगले 5 साल तक रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली के अराउंड आपकी T20 प्लान रोटेट करेंगे? अगर सो तो माफी चाहूंगा और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट. Let's be realistic. India will score 230, which has better technique. Babar Azam or Virat Kohli. Technique, of course, Babar Azam, but Virat Kohli has performed far better for a longer time. I'm not saying Babar Azam cannot, but technique के बारे में बात करें तो Babar Azam, he doesn't have that outside the off stump problem that Virat Kohli है. Virat Kohli has struggled in England. This is his fourth tour to England और एक ही बार वो चले 2018 में. And it's the same problem. Yes, yesterday the ball sat up, but outside the off stump, Virat Kohli has more problem than Babar Azam. मैंने पहले आपको फेक इट इंडिया पे देखा था, फिर जाना आप लेट ग्रेट टॉम वॉटर के सुपुत्र हैं. थैंक यू. फिर जाना कि आप क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं. जी हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने खुद के पर्सनल चैनल पे. चैनल इज कॉल्ड जेमी ऑल्टर इंडियन. बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी टॉपिक पे बनाया है कि कैसे मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट बना 2005 में. क्रिक इन्फो, मैं क्रिक बज़ का संपादक था, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एडिटर था, जी का स्पोर्ट्स एडिटर था. फिर एक दिन मैंने कहा भाई यार मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, मुझे खुद का काम करना है और मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी है. बट यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज डिटेल्स ऑन माय क्रिकेट चैनल. दिवेश मसूरी वेकेशन कैसा रहा? छोटा रहा बिकॉज कम वक्त आईपीएल फाइनल. भैया आईपीएल फाइनल दोस्तों, साला आईपीएल फाइनल संडे को शुरू हुआ और ट्यूसडे को खत्म. मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए. हमें निकलना था मंडे को, हम निकले वेडनेसडे को. तो दिवेश 2 दिन हमारे वहां जाए हो गए. But it was a fun short trip. Maharaja movie releasing end of the year. So I hear. I'm really excited, Devesh. It's my first big budget movie, so yeah. And it's a Yash Raj movie, so let's hope. Chirag Gupta, Jamie bro, I have a different opinion. It's the outcome which we see. If Indian bowlers would have done better, we would have said they're not coming down. But did you? I mean, look, I don't want to be the negative guy here, but did you expect them to do better? The moment they picked Shardul Thakur and Umesh Yadav, मैंने कहा ये टीम तो गई. ये दोनों एक जैसे बॉलर हैं यार. ये 4.5 पर ओवर रन्स लीक करने वाले बॉलर हैं. आपको कंट्रोल चाहिए था. आपको मालूम था कि आपके 4 बॉलर्स में से 2 guys are spent, 2 are not in match shape. You needed a controlling bowler. Ashwin would have bowled you 25 overs a day. Instead, for more than 2 sessions, Rohit Sharma rotated these 4 bowlers. It was a recipe for disaster, Chirag. I don't like to disagree with you, but how much better could they have done? Umesh Yadav starts off in the first over with a deep point. I mean, that means that Rohit Sharma already knew that yaar, ye banda run leak karega. With these 4 fast bowlers, what were you genuinely expecting? I was not expecting much. So, sorry, Chirag, I have to disagree with you here. Dravid's not up to the task, says Varun Kumar, with the senior team. Absolutely. I don't expect much from Rohit anyway. I agree. His lack of seriousness is effective in the team as well. Great comment. I agree. Virat never performed in ICC longer knockouts. He did not, but more than Virat is actually Rohit Sharma's got a terrible record in ICC knockout matches. You look at Champions Trophy, look at T20 World Cup, One Day World Cup, and now the WTC Final. Rohit Sharma is not a knockout match performer. इनके पास ऐसे 7-8 पारियां हैं, बल्कि ये मैंने नोट भी किया था आज. अगर आप मुझे मौका देंगे मैं आपको बता दूं क्या है इनका रिकॉर्ड. Rohit Sharma in last 6 ICC knockouts for India. Okay, let's go back to 2017 Champions Trophy Final, Duck. 2019 World Cup semi-final, he got what, 4 500s, batted exceptionally. He made 1 in the World Cup semi-final. 2021 World Test Championship final against New Zealand, he made 34 and 30. Last year T20 World Cup semi-final, he made 27 of 28 balls. That's a strike rate of under 100 in a flippin' T20 match. Shocking. And in this WTC final, he's made 15. So it shows that yes, Virat Kohli has struggled, but the captain, the most important man in this team, has a terrible record in knockout matches. कहां से ये टीम कुछ जीत पाएगी दोस्तों? My take is red ball and white ball team needs to be different and not basis of IPL. I would agree with you for the most part. Yes, I would. Which batters will play their last test inning in test for India? You mean in this match? I still think the selectors, whoever they are, we have no idea. For 6 months, we don't know who the selectors are or their selectors. I still think this team will persist with every single one of the 4 fading players. That is Rohit Sharma, Virat Kohli, Rahane, and Chiteshwar Pujara. Do I agree with this? No. I think you need to look at the next WTC cycle. The same players who batted in the 2021 WTC final are the same 5 who are here
Something had to give. You had 18 test matches across 2 years to try and do something different. You did not. Of course, Pant was injured. We know. Of course, KL Rahul was injured. Of course, Shreyas Iyer injured. Things would have been slightly different. Rahane would not have been here. Pujara might have not been here had these players been fit. But the fact that you went back to the same top five from 2 years ago, that lost the final says ke bhaiya gadbad hai. Why are young bowlers not considered like Umran, Arshdeep, Chetan Sakaria in Test cricket? Umran Malik has hardly bowled a ball in first class cricket, so I'm not surprised that he's not there. Arshdeep Singh is not a first class. He's not a red ball bowler. He's a white ball bowler. Chetan Sakaria also. Chetan Sakaria is someone who I think stands a better chance of playing a Test match for India than Umran or Arshdeep. But you know, try Mukesh Kumar. Try Mohsin Khan. You've picked Jaydev Unadkat. I know he's not the youngest player, but he's got a damn good record. He's got over 10 years of domestic experience. Play him. Not in the WTC final, but maybe you want to build your next cycle around him, even though he's not. He's was 31, I think he is. But do that. Reward the Ranji performers, not the IPL performers. I'm talking about Test cricket here. Wrongman Jajabor, why they wanted to. Oh yeah, absolutely. I think you joined the stream for the first time, wrong one. I've done 5 shows on this, so of course Ashwin should have played. Of course. ये आईसीसी ड्राउट कब खत्म होगा तपन कह रहे हैं पता नहीं यार 10 साल हो गए 12 साल हो गए who knows. I would rather like Hardik who said no to test rather than players who play for sake. But yeah, Hardik Pandya has not played a test match in 5 years. Logically, you couldn't have expected him to play test cricket. His body is not fit for it. He'll break down and then you'll lose a very good T20 captain. This tendency of BCI to have control over how cricket's played all over the world is alarming. It is, or is it not? It's actually not. It's all finance. Preventing them from gaining exposure in alien conditions has reduced his team to subcontinent bullies. Yes, I agree with the second part. Absolutely. Devesh, Umesh Yadav, has he single-handedly won any match till now? Not single-handedly, but there are very few fast bowlers of his quality who will win you matches single-handedly. At the Oval, where India won 2 years ago, he took 6 wickets. He's had an outstanding home record. He's helped. So Umesh Yadav is never going to win a match single-handedly unless it's West Indies. I think he got 10 wickets in a match against West Indies. He will do outstandingly well in India with the SG ball in conditions that reverse. But overseas, he's never on his own going to win a match. But he did take 6 wickets in India's win at the Oval 2 years ago. प्रियांक पंचाल ईश्वरन रन बना बना के पागल हो गए सोच रहे होंगे कभी डेब्यू होगा इनका बिल्कुल सही है we lost the last WTC final and last test again. Yes, lack of preparation, indeed, wrong one, but also, especially 2021 final, you sat in Southampton where it rained for what, 2.5 days before the final. You went every day to the ground, you saw the gloom, you saw the wet conditions. What did you do? You picked 2 spinners. What did New Zealand do? They dropped a spinner and played 5 seamers. So, as good as Ravi Shastri Virat Kohli combination was in keeping India number one for 5 years, I think it amounted to Jack. You know what I was going to say next, because in the most important match of your 5 year tenure as number one, you didn't know what team to pick. कलंक है ये रवि शास्त्री और विराट कोहली के नाम पे. So I'm not surprised. This time around, the conditions were nowhere near as damp. Nowhere near. Has it rained? Has it rained in 2 days at the Oval? No. 1 घंटे के बादल के नीचे आपने लगा था यार यहाँ तो ना बादल होने वाले हो सके बारिश हो. एक काम करते हैं अश्विन को बाहर करते छठी मैच के लिए और उमेश को खिलाते हैं. You know how long the overcast conditions lasted? An hour. An hour. Before lunch on day one, the sun was out. That track was big. It was a batting. I'm not saying a batting paradise because the ball was jumping about, but there were runs. And like I said, in the second over of the final, I said, my gosh, this team is making 450. So both the 2021 WTC final and the 2023 WTC final, our respected coach and captain blundered. Our batsmen don't seem to be able to play fast bowlers. Well, they were much better, of course. They won in Australia twice, but certain things have to come in. You need players scoring. In 2018, when India won for the first time in Australia a test series, Virat Kohli didn't do a damn thing. He got 100 in a lost cause in Perth. That series was won because Pujara batted for 16, 17 hours. You got support from Mayank Agarwal. You got runs from Rishabh Pant. So it's not like these players cannot play. But 5 years, it's it's an older, it's a slower Pujara. Rishabh Pant is not around.
Shreyas Iyer is not around. When you have a top five, of which four players are at the end of their test career, it is not surprising at all that they're going to struggle. I'm not saying the young players would have come and won this match, but when you're going in with the same top five as 3 years ago, you're not going to get the desired results because let's face it, let's accept it. दुख होता है मुझे कहते हुए, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे ये अपने टेस्ट क्रिकेट के खत्म होने के स्टेज पे खड़े हैं. So Indians can play fast bowlers. They've won series. They won 2 series in Australia. But this team is just a bit too over the edge to compete against Australia. Krishna Chaitanya Reddy's back. If Vihari gets dropped, then Rohit should be. Well, he's Rohit Sharma. He's backed by Mumbai Indians. Very, very tough to see him dropped. Also, Krishna Chaitanya Reddy and all my viewers, to be dropped, you need a selection panel. And for 6 months now, India don't even have selectors. Who's picking the team? ये सवाल आप लोग पूछते हो सोशल मीडिया पर. टैग करिए बीसीसीआई को, पूछिए who are the selectors, who is selecting these players, who's dropping these players. When you don't have a visible coherent selection committee, who's going to drop Rohit Sharma? सोचने की बात है. चलिए, few more minutes and I got to end this stream. इंडिया को ड्रॉ के लिए जाना चाहिए. सतीश कामले, आप कौन से मैच देख रहे हैं? आपकी ऑप्टिमिज्म ने मुझे बहुत बहुत इंप्रेस किया. इंडिया को ड्रॉ, भाई ड्रॉ के लिए इनको अगले 3 दिन तक बैटिंग करनी पड़ेगी. नामुमकिन, असंभव. क्षितिज, when will we learn to read conditions? I don't know. Absolutely they do. विराट कोहली, माफी चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे, विराट कोहली एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड बीटिंग बैट्समैन थे. वो एक ठीक ठाक कैप्टन थे दोस्तों, बिकॉज ही ऑल्सो, आई रिमेंबर 2018 इंग्लैंड थ्रू अ गुगली. इंग्लैंड ने, कहते हैं ना दिल्ली में चॉपसी, इंग्लैंड के कप्तान 2018 में उन्होंने विराट कोहली और रवि शास्त्री को एक चॉपसी दिया. उन्होंने बहुत रेयरली, उन्होंने मैच के एक दिन पहले अनाउंस किया कि हम राशिद खान को खिला रहे हैं, और एक ग्रीन सर्फेस पे, वहां पे बारिश हुई थी मैच से पहले. इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं. इंडिया ने कहा, अरे भाई ये तो राशिद खान को खिला रहे हैं, हम भी स्पिनर खिलाएंगे. उन लोगों ने राशिद खान से बॉलिंग ही नहीं कराया उस मैच में. इट वाज अ ग्रीन टॉप, क्रिस वोक्स गॉट विकेट्स. इंडिया ने उस ग्रीन टॉप के ऊपर इंडिया को 3 दिन में हराया. इंडिया ने स्पिनर खिलाए. देन 2021 फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, just like WTC final, Indian team sat in wet, drizzling, dreary, dull Southampton. मैं साउथहैम्पटन जा चुका हूँ 3 बार. बहुत ही पकाऊ, बोरिंग शहर है वो इंग्लैंड का. 3 दिन तक बारिश पड़ी WTC फाइनल से पहले. मैच में बहुत बारिश हुई. इंडिया ने क्या किया, यानी कि कोहली और सचिन ने क्या किया, 2 स्पिनर खिलाए उस गीली विकेट पे. न्यूजीलैंड ने क्या खिलाया, एक भी स्पिनर नहीं, 5 सीमर्स. इससे साफ मालूम पड़ता है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री उस अपने 5 साल के टेन्योर में सबसे बड़े मैच में वो कंडीशंस को जज नहीं कर पाए. और यही गलती, अफसोस की बात है दोस्तों, यही गलती रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने किया. अगर आपका चौथा पेस बॉलर मोहम्मद आसिफ होता, ग्लेन मैग्रा होता, जहीर खान होता, तो आपका बनता था नंबर 1 टेस्ट बॉलर को बाहर करके. आपका फोर्थ ऑप्शन क्या था, उमेश यादव. Sorry. India lost that series to a debutant Sam Curran, and the inability to get India's tail or almost like alternate plans or our Achilles heel. Absolutely, Sam Curran took wickets, scored low order runs. Anderson Broad, lot of good performers. But anyways, 2018 के बाद से team काफी improve हुई है. They've competed in South Africa at least. They've not won, but they've competed in South Africa. And after all said and done, India has won their last 2 tours to Australia. Very few Asian teams go to Australia and win. In fact, no Asian team has ever won a test series in Australia except India. India did it against top teams, especially last time. Those are beastmen. To go from 36 all out. This is why I'm saying let's not write this team up. Of course, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन एक इंडियन टीम, एक बहुत ही खराब इंडियन टीम, क्यों मैं खराब कह रहा हूं, आपको याद होगा या याद नहीं होगा तो आपको याद दिला दो. 2020 में इंडिया वर bowled out for 36 in the pink ball test in Adelaide. The world had written this team off. They said it's going to be 4-0 to India. Virat Kohli flew home for the birth of his first child. Rohit Sharma had not yet proven match fit. Before, during, and after the remaining 3 test matches of the 2020 tour to Australia, the Indian team lost key players. Mohammad Shami was lost after the 36 all-out match. Umesh Yadav was lost during the Sydney match. After the Sydney match, Ashwin
and Hanuma Vihari and Jadeja were ruled out. By the time India, who had done exceedingly well to win at the MCG, draw at the SCG, they did not have 11 first choice fit players to pick for the GABA. The same GABA, dosto, where for 31 years no Australian team had ever been beaten. For that team to counter Australia's pace bowling, for Pujara to stand there, I interviewed Pujara on this channel shortly after that series, and I said, "How many bruises do you have?" He said, "I have 10 bruises." The way that Ashwin, and Bihari drew that match, the way that Mohammad Siraj, Washington Sundar, Shardul Thakur stood up in that GABA test, the way that Shubman Gill batted, the way that Rishabh Pant batted, it's not like this team cannot perform in overseas conditions. आप ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा चुके हो, लेकिन जब कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं, जब कुछ प्लेयर्स पास देयर प्राइम हैं, तो आप क्यों उन्हीं प्लेयर्स पे निर्भर हो? इट वाज अ टाइम टू पिक सम फ्रेश ब्लड, यू डिडंट. I think the moment this team moves beyond some very senior players, some legendary players, and starts to go through that upheaval process, the light at the end of the tunnel will be bright. So let's not be too disheartened. Hello, Tibetan Nomad. Kaise ho, bhai? Good morning. Do you think India will say follow on? I think so, yes, but not much beyond that. It could also be. I mean, a lot of people have commented here कि भाई ये मैच तो आज पहला सेशन में पहला सेशन में इंडिया के पहले पारी खत्म हो जाएगी. गौरव, कोहली रोहित को अब टीम इंडिया से निकल देना चाहिए. एक हद तक आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कौन करेगा मेरे दोस्त गौरव? 6 महीने से कोई सिलेक्शन पैनल नजर नहीं आती, तो सिलेक्टर्स का काम है ना ड्रॉप करना. इनको कौन ड्रॉप करेगा जब सिलेक्टर्स ही नहीं है? चलिए लास्ट. अरे अभी नेट टेक्नो इज बैक. इट्स हार्ड टू कम बैक. व्हाई वी प्ले रोहित शर्मा, वेयर इज हार्दिक पांड्या? यार भाई, हार्दिक पांड्या दोस्त क्या सवाल पूछ रहे हो यार? Hardik Pandya has not played a test match for 5 years. He doesn't play red ball cricket. You expecting him to come back now? वो तो 5 साल पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हो. इनका नाम क्यों ले रहे हो भाई आप? He doesn't even play first class cricket. He's only a white ball player. यार, he's very injury prone. उमेश की जगह उनादकोट को खिलाना था. नहीं 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 सतीश कामले, मेरी तो ये व्यू है, मेरी ये राय है कि उमेश की जगह आपको अश्विन को खिलाना चाहिए था. फोर्थ पेसर की जरूरत नहीं थी इस पिच पर. आपको एक कंट्रोलिंग बॉलर चाहिए. उनादकोट नहीं था मेरे हिसाब से. That's just my view. I think Ashwin. चलिए last question. Ashwin has better timing than KS Bharat. Exactly why I said on the preview show on 3 different news channels, you need to pick Ashwin, not just because he's the #1 test bowler with 474 wickets. He's got a much improved record overseas, but he's also got 5 test hundreds. और क्या हुआ कल? इंडिया की पहली पारी में 2 सेशन के अंदर 5 विकेट. अब कहां से आएंगे लोअर ऑर्डर रन्स? इसके बाद आपके पास सिर्फ शार्दुल ठाकुर हैं. क्या उमेश यादव रन बनाएंगे? क्या मोहम्मद सिराज रन बनाएंगे? क्या मोहम्मद शामी रन बनाएंगे? घंटा, as we say. You needed Ashwin as much for his controlling bowling. I'm never expecting him to take 5 wickets against this team, but you needed control. Shardul Thakur, Umesh Yadav did not give you control. Who gave you control? Ravindra Jadeja. Whatever the conditions are, I don't give a damn. You need Ashwin's control. This is not a 5-test series against England. This is a one-off WTC फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इंग्लैंड यहाँ पे नहीं है. आप एक अलग किस्म की टीम के साथ खेल रहे हो. आपको अश्विन की जरूरत थी, और मैं दोबारा कहूंगा, अश्विन के पास जो 5 टेस्ट सेंचुरीज हैं, उस बैटिंग की कमी आज को आप जरूर महसूस होगा. आधे घंटे के अंदर जब एक विकेट गिरेगा, यूल से यार काश अश्विन होता, कुछ तो करता बंदा. बट मैं कौन हूं बोलने वाला? इंडियन टीम नहीं मानती अश्विन को लायक अपनी 11 में, तो छोड़िए, राइटिंग्स ऑन द वॉल. India guess score. My guess 190 all out. I would say 215. That's my last comment. Anyway, दोस्तों, 34 minutes. Wow. Thank you to all of you who watched the show. Do come back and see me. Please subscribe. Please like. I know I'm very irregular. मैं काफी inconsistent हूँ, लेकिन मेरे पास और भी काम है. So let's just catch up again. Hopefully मैं आपको 10:30 बजे रात को मिलूंगा मैच के बाद, मतलब डे के बाद. Let's not hope the match is over, but who knows. Thank you to every single one of you who commented, who liked, who asked questions, who debated. आपने कुछ सवाल किए, मैंने कुछ जवाब दिए. I love this rabta, this connection we have. Have a great day. Let's hope Indian team can show some fight, show some spine. मैं आपसे मिलूंगा 10:30 बजे डे 3 की समाप्ति के बाद. Have a great day. Love you all. Take care. जय हिंद.